20. Yeah. My voice is clear? Yeah, yes, sir. Okay, and screen is also visible? Yes, sir. Okay, great. So we'll start with the in continuation with the previous lecture only. Some of the questions are there that are pending for the discussion. Okay, इसमें से काफी सारे factual question ही है. We'll cover it and we'll see during the discussion. If anything important, we'll cover the background of the question too. Okay, so again by starting this question 39 number, how much minimum space is required to open a wholesale drugstore? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगेन ऑप्शन ए इज 108, ऑप्शन बी इज 150, ऑप्शन सी 120 and ऑप्शन डी 200 is there. Okay, so anyone know what is the answer for this question? एक्चुअली तो कौन सा भी आपका रिटेल स्टोर हो या होलसेल स्टोर हो, अगर आपको ड्रग स्टोर ओपन करना है तो मिनिमम 10 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए. ओके, 10 मीटर स्क्वायर के, सॉरी नॉट 10 मीटर स्क्वायर, अराउंड है वो उतना ही है. सो इफ यू कंसिडर दिस, इसमें से अगर यूनिट्स कन्वर्जन देखोगे स्क्वायर फीट में अगर प्रोवाइड करोगे तो अगर वो है तो 108 स्क्वायर फीट, ये उसका आंसर है. उसमें लाइक वी कैन नॉट अप्लाई एनी लॉजिक. अगर आपको पता है तो देन यू कैन गेट द आंसर. इफ यू डोंट नो यू कैन नॉट सिलेक्ट. ओके, इसमें लॉजिक जैसी कुछ चीज नहीं है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दैट इज 108 स्क्वायर फीट is the minimum space required to open the wholesale drug store. Okay, let's move the next one. Sparingly soluble. अब इसकी टर्मिनोलॉजीज काफी टाइम हमारी डिस्कस हुई है. लाइक how many parts are required to the solute to dissolve this solvent के कितने पार्ट चाहिए आपको solute dissolve करने के लिए, B उसके option. accordingly. Yes, B option. what 30 to 100 parts, right, for sparingly soluble. 30 to 100 parts is the right answer. sparingly soluble के लिए अगर आप देखोगे तो that is the right answer. Okay, तो उसमें कुछ terminologies है, accordingly we identify the option. Okay, so 30 to 100 parts are required. Okay, so option B, that is the right answer for the this question. sparingly soluble का आप consider करोगे तो. Okay, 30 parts or 100 to less than 1 parts ये terminologies नहीं है. And next question is dash dash is used as accelerator in rubber manufacturing. रबर मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सेलरेटर है वो कौन है? ऑप्शन ए सल्फाइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, जिंक क्रोमेट, एंड लास्ट वन इज ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. एनी आइडिया? रबर मैन्युफैक्चरिंग. यस, व्हाट इज दैट? लेट्स कवर सम ऑफ द पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो जो रबर हम यूज करते हैं, देखिए पैकेजिंग मटेरियल का है. आपके इंजेक्शन में अगर कंसिडर करो तो इंजेक्शंस में काफी जगह पे इंजेक्शन में आपका रबर जो है वो मटेरियल हम एज अ पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं. ओके, देयर आर राइट डाउन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू दिस. मोस्टली सारे रबर्स ओपैक होते हैं. द अपीयरेंस इज ओपैक, बट सिलिकॉन रबर is translucent in appearance. Okay, if you see the types, how many types of the rubbers are there? Natural type, natural consider it is made up of the polyisoprene latex. Oh, tree, rubber tree called Hevea braziliensis. Hevea, Hevea braziliensis.
Natural के बाद second type it will come, that is gray rubber, or we also call it as a gray butyl rubber. It's a synthetic rubber and it is made up of the polyisobutylene polymer or monomer. Polyisobutylene. Third type is nitrile rubber, जो आपका ग्लोव्स में भी दिखता है काफी जगह पे. The gloves are also made up of this nitrile rubber. जहाँ पे जब का मोनोमर है that is butadiene acrylonitrile. Next type is chloroprene. It is made up of the neoprene. It is also thin synthetic. And silicone rubber is also one of the type of the rubber, which is made up of the polymethyl siloxane. Polymethyl siloxane. अभी कोई भी देखोगे like if you consider any synthetic rubber, that is gray butyl रहेगा, nitrile रहेगा, chloroprene रहेगा या silicone rubber रहेगा, इसमें जो ingredients रहते हैं like based on the method of manufacturing, these ingredients are some of the commons, like what we are using in the during the rubber manufacturing. The first thing is a polymer, then we also use the vulcanizing agents, then accelerators. रबर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट आर द एजेंट्स दैट वी आर यूजिंग टू सिंथेसाइज दिस रबर्स, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस पार्ट. देन एक्टिवेटर्स, फीलर्स, antioxidants, then lubricants we are also using, softeners, then colors or pigments, and coating agent. Okay, ये general examples that we are using as ingredients in the rubber manufacturing. पॉलीमर्स अगेन बेस्ड ऑन द मोनोमर. आपका इलास्टोमर है वो कौन सा है, उस पे आप डिपेंड करते हो कौन सा मोनोमर है, और वो मोनोमर के हेल्प से आपका कौन सा रबर आगे जाके बनने वाला है. जैसे कि ब्यूटाइल रबर होगा, पॉलीप्रोपिन होगा, देन नियोप्रिन होगा. ये सारे जो मोनोमर्स है जैसे कि हमने यहाँ पे कवर करे, लाइक दिस ऑल एग्जांपल्स, these are the examples of your polymers that we are using. Okay, write down some of the vulcanizing agents. These are also called as the curing agents. Curing, curing, curing agents. Write down the examples: sulfur peroxide, then cadmium hexamethylene diamine, cadmium hexamethylene diamine. Okay, then accelerators, you can write it down, some of the examples of sulfide, then guanethidine, then tetramethyl thiourea. These are some of the examples of accelerators we are using. So यहाँ से ये question है आपका. So if you look at the question, then you'll obviously get the answer that sulfide is used as an accelerator in the rubber manufacturing. Okay, then write down some of the examples of the activators. Activators mostly zinc based compounds like zinc oxide, then zinc stearate, also stearic acid, etc. Fillers, write down the examples of fillers: cobalt black, then limestone, then talc, then calcium carbonate, carbon black, etc. Then antioxidants का कोई ऐसा specific example नहीं है अपने पास. You can write down for the lubricants: zinc stearate,
and talc. Then softeners में add on the example of the mineral oils that we can use as softeners, flexibility provide करने के लिए. Then dyes या colors में coal tar dyes basically हम use करते हैं. And if you see the coating agents में epoxy और teflon coating. Okay, so along with your accelerators ये बाकी सारे agents पे आपको पता होनी चाहिए. So yes, option A, that is sulfide, is the right answer for this question. That accelerator sulfide is used in the rubber manufacturing. Okay, then let's move to the next one. Next question, that is suspension is not suitable dosage form for the what type of injection? Option is A, intra-articular. Option B is intramuscular. Option C, intradermal. And option D, intravenous. What is the answer? Intravenous. यस ऑप्शन डी Intravenous. सस्पेंशन कोई भी यूज नहीं कर सकते हो वहां पे. सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स है जो सोल्यूबल नहीं है वो आपके वेन्स को ब्लॉक करने के ज्यादा चांसेस है. इंट्रामस्कुलर या डर्मल या आर्टिकुलर में वो कोई इश्यू दिखाते नहीं है. यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इंट्रावेनस इज द route where we cannot use the suspension as a dosage form. Let's move the next one. That is silica gel in the pharmaceutical packaging is used as. Option A is a sealer. Option B, desiccant. C, sticker. Option D, none. What is the answer? Anyone is having idea? Yes, desiccant. Moisture control करने के लिए जो formulations वहाँ पे आपका moisture का impact हो सकता है stability पे, ऐसे सारे compounds में desiccant use करते हैं. अभी how do you know कि moisture is affecting your formulation? What study we are performing? Any idea to identify the moisture? Hygroscopicity studies. Yes, what? Hygroscopicity studies. And what we're doing? Antimicrobial studies both we perform. No, hygroscopic and antimicrobial is not like we cannot claim based on the antimicrobial result study that your compound is there or your moisture is impacting the stability. Yes, some of the cases में हो सकता है, but if you consider the solid oral solid dosage form, so solid dosage form में there is already we do not have any moisture present in the compound. Okay, होता भी है तो काफी कम जगह पे होता है, 4 to 5% में होता है, तो उसमें से एंटीमाइक्रोबियल या माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के चांसेस काफी कम है. तो एंटीमाइक्रोबियल स्टडी पे हो सकता है. हाइग्रोस्कोपी स्टडी व्हाट वी आर डूइंग नॉर्मल इन दिस? एनी आइडिया? मतलब आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस स्टडी लाइक व्हाट वी आर डूइंग. हाइग्रोस्कोपी स्टडी में क्या also do LOD, loss on drying. एलओडी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस ऑन ड्राइंग. Another testing that we are using is Karl-Fischer titration. For moisture detection. Yes. For moisture analysis, right? Karl-Fischer. Yes, Karl-Fischer. अभी ये जो LOD या Karl-Fischer analysis है, these are not for the pharmaceutical packaging. Okay, you clear this thing. These things are with respect to the formulation. आपका टैबलेट है, आपका कैप्सूल है, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलओडी एज वेल एज द मॉइस्चर कंटेंट. बट इफ यू वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, वहां पे हम जो यूज करते हैं टेस्टिंग, लाइक आपका जो पैकेजिंग मटेरियल वो कितना कैपेबल है मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए या मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज योर MVTR. MVTR is simply moisture vapor transmission rate. Moisture वेपर ट्रांसमिशन रेट. अभी ये मोस्टली आपके जो HDPE बॉटल्स है, HDPE बॉटल्स और उसके जो कैप्स रहते हैं, क्लोजर्स रहते हैं, मोस्टली पॉलीप्रोपिलीन के रहते हैं. और HDPE पॉलीप्रोपिलीन या इवन एल्यूमिनियम के जो ब्लिस्टर्स रहते हैं, उन ब्लिस्टर्स का जो आपका इफिशियंसी है टू ट्रांसफर द मॉइस्चर, वो हम स्टडी करने के लिए मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट दैट इज MVTR परफॉर्म करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपके फॉर्मुलेशन या आपके पैकेजिंग में कितना डेसिकेंट रखना पड़ेगा या कितनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी वो हम डिसाइड करते हैं. ओके, सो जितना आपका पैकेजिंग मटेरियल वीक होगा वहां से मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में आपको अपने फॉर्मुलेशन के अंदर ज्यादा डेसिकेंट रखना पड़ेगा. अगर आपका MVTR अच्छा है, मॉइस्चर सॉरी मतलब कम है, मॉइस्चर वेपर अच्छे से ट्रांसफर होता नहीं है, इन दैट केस यू कैन से दैट आपका जो फॉर्मुलेशन है वो वाटर के लिए ससेप्टेबल नहीं है. इन दैट केस यू कैन यूज द लो क्वांटिटी ऑफ द डेसिकेंट विद योर फॉर्मुलेशन. Okay, so yes, if you see the option, the silica gel
is used as a desiccant. Okay, but along with the this you keep MMTR as well as ELOD, Kalfisher, these analytical techniques to control the moisture in your packaging as well as your formulations. Okay. Okay. Any doubt in this part? So option B is the right answer, desiccant. Okay. Let's move to the next one. Mac-Michael viscometer is which type of the viscometer? Option A is a capillary, option B falling sphere, option C cup and bob, and option D cone and plate. Any idea? Mac-Michael? Yes? It is cup and bob. Okay. So capillary viscometer का कुछ idea है? What are these capillary viscometers? Any example you can provide for the capillary viscometers? Your Oswald viscometer is the capillary viscometer, right? Falling sphere? Normally Hoppler viscometer? Hoppler. Yes. And if you see the cup and bob में again दो types के हैं. That C.V. Subramaniam is providing the reference for this information. That is co-ed type. And your next one is cell type. Okay, so if you see the co-ed type, the example is your Mac-Michael viscometer. Okay, and if you see the cell type, the example is Stormer. Brookfield. No, Brookfield is not cup and bob. वहां पे आपका ब्रुकफील्ड में टी शेप स्पिंडल होता है. ओके, इट इज अनदर डिफरेंट टाइप. ये आपको मतलब इन की कोई क्लासेस में वो कैटेगराइज नहीं होता है. एंड देन लास्ट वन इज योर कोन एंड प्लेट. ओके, सो if you see the option Mac-Michael viscometer आपका cup and bob से है. So option C is the right answer for this question. Okay, let's move to the next one. That is, which of the following is added to maintain the pH of sodium thiosulfate in optimum range of the stability of the solution? अभी इंजेक्शन से क्वेश्चन है. Again, this is factual question. Okay, option A is sodium bicarbonate, option B is the chloroform, option C is sodium carbonate, option D PEG. Any answer? Sodium bicarbonate. No? Yeah, sodium bicarbonate is the right answer for this question. Yes. Sodium bicarbonate. Yeah, option A, sodium bicarbonate is the right answer for this question. Okay, again, let's move to the next one. Following mixtures is of irreversible type. अब ये थोड़ा सा I am also even not so sure कहाँ से question आ चुका है ये, but the answer for this is negative mixture. I tried to find the source of this also question too, but anyone is aware about this question area? That's just following mixture is of the irreversible type. So with respect to what the question is looks a little unclear. Sir, I think ये Newtonian, non-Newtonian fluids से है. नो, इरिवर्सिबल टाइप. बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल मिक्सर आपका ऐसे कुछ रियोलॉजी में क्लासिफाई होता नहीं है. बेसिकली वो नॉर्मली क्लासिफाई दिस सोडो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक फ्लो. और वहाँ पे टाइम डिपेंडेंट एज वेल टाइम इंडिपेंडेंट हम वहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, लाइक थिक्सोट्रॉपी, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी एंड रियोपेक्सी इज आल्सो देयर. बट रिवर्सिबल टाइप और इरिवर्सिबल टाइप ऐसा कहीं पे भी आपका रियोलॉजी में क्वेश्चन मतलब सपोर्ट नहीं करता है रियोलॉजी इस क्वेश्चन के लिए. I'm not so sure about this question. If anyone also find this, let me know too. The option negative mixture is the right answer for this. But don't worry about such questions. ये आपके normally GPAT से आएंगे नहीं. So like question itself looks the incomplete. So don't worry about this. Let's move to the next question. That is, Swesson-Walker crystallizer is dash type of. Any idea? कौन सा type का crystallizer है? Freeze crystallizer. Scraped surface crystallizer, freeze crystallizer. Option C is both A and B, and option D is evaporated crystallizer. Are you sure about the option B, that is freeze crystallizer? Yes, sir. Any other answer? See, based on the principle, if you see the principle, cooling के basis पे आपका Swesson crystallizer work करता है, right? If you see the instrumentation,
As per the instrumentation, your Swanson Walker crystallizer also works on the surface. ओके, सरफेस पे आपका क्रिस्टलाइजर बनता है और सरफेस पे क्रिस्टल जो बनते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग mechanism. Okay, so scraped off surface crystallizer, that is option A, is also relevant answer for this. So अगर scraped surface crystallizer और freeze crystallizer दोनों देखोगे तो option C is there, option which supports both and which concludes with both options. So option C, that is both A and B, scraped surface crystallizer as well as ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन के बेसिस पे ऑप्शन दिया है, और फ्रीज क्रिस्टलाइजर ये जो ऑप्शन दिया है वो आपको मैकेनिज्म के बेसिस पे दिया है. सो बेस्ड ऑन बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, is the right answer for this question. Okay, so along with this, write down some of the other examples of the crystallizers. You can make the table. शॉर्ट में ही हम बनाएंगे crystallizer and method, principle उसका क्या है. Okay, first write it down. The tank crystallizer, which is normally works on the cooling. Swanson Walker, again the principle is same, that is cooling. Then crystal crystallizer, तीनों भी देखोगे तो प्रिंसिपल उसका सेम है, that is cooling. When if you see the also crystallizer, that is subtype of the crystal crystallizer only. So ये आपका evaporation पे काम करता है. The principle of operation is evaporation. And if you see the magma crystallizer, magma also works on the evaporation. Just some of the principles और कौन से examples आपको पता होने चाहिए, that is the basis behind this question. Okay, so थर्ड वाला कौन सा है वो क्रिस्टल है? Oslo, OSLO, that is also subtype of the crystal crystallizer only. Crystal crystallizer का थोड़ा सा modification design में, so उसको हम also crystallizer बोलते हैं. Okay, so option C, that is both A and B, is the right answer for this question. Let's move to the next one. Question number 49. According to the IPBP, very fine powder is one of which? Option A is the all particle pass through the 120 sieve. Option B, particles pass through the 350. Option C, again 85% particle pass through 350. And option D, 90% particle are of size less than 10 micrometer. So ये चार options है. Again very fine, जैसे कि हमने solubility parameters देखे वैसे ही आपके IP या BP में पाउडर्स की कैटेगरी दी है, कोर्सर पाउडर, फाइन पाउडर वगैरह वगैरह. So again this, 120. yeah, this is again the factual question. The particle that passes through the 120 sieve is identified as the fine powder. Okay, again 120 sieve का ये 120 कहाँ से आता है हमने डिस्कस किया था, इसके अकॉर्डिंगली आगे क्वेश्चन आ जाएगा. Okay, let's move to the next one. Total 100 squares in a half inch area is termed as. Option A is 0.1 mesh sieve, option B 10 mesh sieve, option C 40 mesh sieve, and option D 25 mesh sieve. Again this question is like, yes, anyone, what is the answer? sieve apertures को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है. लाइक sieve नंबर कैसे आइडेंटिफाई होता है या असाइन होता है? Any idea sieve number? How do we assign the sieve number? Yes, anyone? As the aperture size decreases, the sieve number increases. Yes, that is the relation that we are concluding from the sieve number and your mesh size. But how do we assign? Like if is there is one, तो लेंथ में कितने स्क्वायर है what length? उसका, Total सपोज length वन you are साइड taking? पे 10 है और दूसरी साइड पे भी 10 है. No, that is not the नहीं, case. ऑफ द गिवन एरिया. What is the area? That is what I am specifically focusing on. जो आपका एरिया होता है that is 1 inch square. आपके 1 inch square को आप लो, like this is your 1 inch square area. इसमें आपके कितने apertures है? जितने apertures रहेंगे उतना उसका sieve number रहेगा. Like if you consider my sieve number is 10 mesh, मतलब आपके 1 inch square में
जो स्क्वायर आपका बना है 1 इंच का, उसमें आपके 10 एपर्चर्स बने। ओके, 1 इंच सिंपल इज नथिंग बट द 2.54 सेंटीमीटर। ओके, 2.54 बाई 5, ये इतना डायमेंशन आपका 2.54 रहेगा, यहाँ से भी 2.54 रहेगा, यहाँ से भी 2.54 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ से भी 2.54 सेंटीमीटर रहेगा। सो 2.54 स्क्वायर लो, उसमें आपने जितने मेश, जितने आपके एपर्चर बनेंगे उसके हिसाब से हम असाइन करेंगे आपके सीव को योर मेश नंबर। बट एज पर दिस प्रिंसिपल if you do total 100 squares in half inch, ओके, हाफ इंच में ही आपके 100 स्क्वायर्स है। और 1 इंच है, 1 इंच स्क्वायर। सॉरी 1 इंच, 1 इंच स्क्वायर में आपके 100 एपर्चर्स है, सो अकॉर्डिंगली द राइट आंसर शुड बी द 100 mesh sieve. The option is not provided in the answer, so option E you can consider, that is 100 mesh sieve is the right answer for this. I think there might be further. 10 मेसी बस है ना, How? बिकॉज आपण मेजर करतो, सपोज तो पर्टिक्युलर एरिया मध्ये बघतो आपण, आता दोन Right. साईड Sorry, your voice is gone, Snail, I think. कन्सिडर करू इज डिसाइड. No, your voice is not so clear. I'm not able to hear you. See, the question is simple. Total 100 squares in the 1 inch square. So 1 inch में आपके 100 squares है। ओके, 100 स्क्वायर से तो आपके अपर्चर्स भी या मेश भी या होल्स भी जो हुए 100 से बनेंगे। ओके, और 100 बनेंगे तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज द मेश नंबर दैट यू हैव टू असाइन, दैट इज 100 मेश sieve, not 10 mesh sieve. Hello, am I audible to you? यस सर। So any doubt still in this question? So as per the conclusion, the option is not provided in the answer. The option should be the right answer for this question should be the 100 mesh sieve is the should be there. Okay, but if you see the options, none of the option above is matching the answer. So don't worry about it. Just go through the option. Consider like option E is there and 100 mesh sieve is the right answer for this question. Snail, any doubt? नो सर। Satisfied with the justification? यस। Okay, let's move to the next Yes, one. sir. Clarification is term used when the solid content of the product is dash dash dash. Option A is it does not exceed 1%. Then option B does not exceed 10%. Option C does not exceed the 50%, and option D all of the above. Anyone any idea on this part? Clarification. कहाँ से आता है ये क्वेश्चन? एनी आइडिया? सस्पेंशन। It comes from the filtration pharmaceutical engineering. Okay, वहां से आपका आता है. The answer again is the factual. It does not exceed the 1%. Okay, let's move to the next one. That is bolting of lubricants means lubricant A is lubricant is passed through the 200 mesh. Lubricant passes through the 100 mesh of the nylon cloth. Then option C, lubricant is completely degraded fit for use, and option D, lubricant reacts with the methyl cellulose. Now, what is this bolting of lubricants? Any idea? Bolting is the operation that we perform to dry our lubricants. Okay, again, factual question has, and option B, that is lubricant passes through 100 mesh of the nylon cloth, is operation to perform the drying of the lubricants. Okay, so that we call it as a bolting. Okay, let's move to the next one. Which of the following is a carbohydrate based binder? Option A is the gelatin tablet से आपका diluent से, sorry binder से. Option A is the gelatin, B is the PVP, option C both A and B, and option D none. Any idea? Carbohydrate based binder.
ऑप्शन बी पॉलीविनल पैरालिडोन इज द राइट आंसर। जेलेटिन आपका कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नहीं है। ओके, ये आपके एनिमल बोन एंड स्किन से जो फैट्स और लिपिड्स निकलते हैं वहां से ये बनता है। ओके, so this is not carbohydrate. Option B, PAP, is the right answer for this question. Let's move to the next one. Which of the following is a pH sensitive bioirradiable polymer? Again, novel drug delivery से आपका क्वेश्चन है ये। ट्रांसडर्मल से, ट्रांसडर्मल पैचेस या इवन इम्प्लांट्स में हम यूज करते हैं इसको। सर ए ऑप्शन पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। Yeah, that is again factual question. Polymethyl acrylate is the pH sensitive bioirradiable polymer. जो सबलिंगुअल आपके पैचेस होते हैं या फिल्म्स होते हैं वहां पे मेजरली यूज होता है। मतलब आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली इरोड होके बॉडी में निकल जाएगा। वहां पे आपको फिर से उसको लाइक पर्टिकुलर टाइम रख के उसको फेंक देने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व एंड योर ड्रग विल बी डिलीवर्ड टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन ए पॉलीमेथिल एक्रिलेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एचपीएमसी या सीएमसी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है आपके। Okay, let's move to the next one. As talc should not be used as lubricant in case of drugs. Option A is the iron is used as a catalyst for their breakdown. Then option B, which have the high flow property. Option C, which have magnesium stearate as lubricant. And option D, both B and C. Any idea? Option B. Having the high flow property. Why? We cannot use the Lubricant is talc. basically required to increase the flow property ना, तो अगर already high है तो Yes, already आपका है तो जरूरत नहीं है। Yes, that is right answer that we can consider. But again, if you see the option B, option C, magnesium stearate आपका ऑलरेडी यूज हो रहा है वहाँ पे। अगर मैग्नीशियम stearate की प्रॉपर्टी है, अगर if we are using that with the talc, it will show the surface phenomena, and based on that वहाँ पे आपका excess lubrication होने के chances होते हैं, and because of this excess lubrication your powder will start generating the static charges, and the static charges will again indirectly and directly impacting on the flow. Okay, so option, if you see the but option when D, we formulate aspirin का tablets तो उसमें we add talc as well as magnesium stearate. aspirin tablets, हाँ. I think there सर will come. Yes, sir, even if we formulate the gastroretentive floating tablet, there also be like add on this talc and steroid. but the ratio should be optimization. Then अगर वहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा कि आपका फ्लो जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई थिंक वहां पे जो रेशियो आपका प्रोवाइड किया होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाल्क एंड मैग्नीशियम stearate? But I'll check it once. Yes, I'll have to check. I don't remember you just it. go through it, no issues, you can check it. But as per my experience, there is the issue that we're facing. So टाल्क अगर आप मैग्नीशियम stearate के साथ यूज करोगे तो ओवर लुब्रिकेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पे। सो इट विल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लेंड। सो फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छे से नहीं होगा तो आपका यूनिफॉर्मिटी एंड से विल बी इम्पैक्टिंग इनडायरेक्टली। So as per the conclusion, I think option D, that is both B and C, is the right answer for this question. No issues. If you want to challenge the question, you can connect me later on. I will see in detail. But as of now, please consider this option, that is option D, both B and C as the right option. So we cannot use the talc along with magnesium stearate as well as the compounds that is having the high flow property. Okay. Let's move to the next one. In which Yes. step sugar coating? Yes. Question 15, question number 56. In which step of the sugar coating process colorant is used? Any idea? Which steps? जहाँ पे हम colorant use करते हैं? Are you recalling the steps of the sugar coating? What are the steps of sugar coating? So subcoating.
Steps of the sugar coating. What is the sequence of the sugar coating steps? The first it will come the seal coating, right? Sealing is the first, then subcoating will be the second, then syruping will be the third stage. Okay, subcoating में seal coating में आपका क्या होता है? We are preventing the moisture penetration. Okay, if you see the subcoating, वहाँ पे आपका weight gain tablet का and even जो aging का issue है, that is like rounding, वो हम perform करते हैं. And at the last syruping. Okay, जो syruping में आपका further polishing होता है कोई भी tablet का. Okay, smoothing as well as in this step only, this is the outermost layer. Okay, जहाँ पे हम color add कर सकते हैं. So yes, option B, syruping is the right answer for this question, that sugar coating process, syruping, in which we can add the colorant during the coating. Okay, let's move to the next one. Question number 57. Which of the following is a water insoluble polymer? Option A is the acacia, B is the methyl cellulose, option C is, sorry, B is the methyl cellulose, option C the ethyl cellulose, and option D none of the above. Water insoluble, again this is factual question, ethyl cellulose is the right answer for this one. Okay, acacia, methyl cellulose. Acacia अगर आप देखोगे तो वहाँ पे again दो parts है, एक if you refer the cognos C. Okay, so water soluble pigment is there and water insoluble pigment is tragacan में भी same case है. Okay. Continent Basore something. Yeah, so that some of the portion is water soluble already, so we cannot consider this option. Methyl cellulose also यहाँ पे अगर आप consider करोगे तो carbon number थोड़ा सा less है, as carbon number increases the water solubility decreases. Okay, so option C वो fact नहीं है, but actually this is again factual, आपको पता ही होना चाहिए. In that case we cannot apply any logic. So option C, that ethyl cellulose, is the right answer for this question. Let's move to the next one. Guidelines on the stability testing of the drugs are given in option A ICH, option B USFDA, option C both, and option D none. ICH. ICH. Okay, so ICH में अगर आप consider करो, there are 4 major types of the guideline. Quality, Safety, efficacy, multidisciplinary. yeah, safety, efficacy, and multidisciplinary guidelines. Okay, so यहाँ पे at least you should know about the quality guidelines. Q1 से लेके आपके Q14 तक है. Any idea what is ICH Q1? Yes. Stability. Yeah, it is a stability guidance. ICH Q1. See, at least ICH Q1, Q2, Q3 कौन से है वो तो आपको by default पता ही होनी चाहिए. वहां पे आप कोई भी ऑप्शन like skip करने का चांस नहीं है. So just write it down. Option ICH Q1 is the Sir, are you writing something? yes, I am writing, but my pen is not working. It is. आपको दिख रहा है कि वहां पे कुछ लिख रहा है वैसे? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा. No, नहीं sir. sir. वो पेन शायद अचानक से बंद हो गया. Let me check just 1 minute. You can write it down. मैं along with आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिखना है. ICH Q1, write it down please. That is for the stability guidances of drug substance as well as drug product. That मतलब API भी वहाँ पे आपका stability testing करना है तो Q1 से होता है. Q2 मतलब उसमें सब types है, ICH Q1A, Q1B, Q1C ऐसे. But generally इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. Q1 you can write it down simply for the stability testing. Yes, अभी लिख रहा है वो. Option B, sorry, ICH Q2, any idea? That is with respect Analytical to validation. yeah, so that is with respect to the AMV, that is analytical method validation. ICH Q3, that is with respect to the impurities.
ओके, एटलीस्ट आपको ये 3 पता होनी चाहिए. देन Q4 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है. देन Q5 इज विद रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंड 6 वगैरह 7 8 9 आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड है. दैट इज नॉट फॉर द मेजर. अगर आपका आएगा तो Q1 Q2 Q3 से क्वेश्चन आने के चांसेस है. ओके, सेफ्टी एफिकेसी जहाँ पे आपकी इतनी जरूरत नहीं है. मल्टीडिसिप्लिनरी में आपका सबमिशंस कैसा होना चाहिए, दैट एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. ओके, सो ऑप्शन ए, that is the ICH is the right answer for the stability testing. And again, this ICH is applicable for the Europe as well as US and Japan. सो यूरोप में जितने भी कंट्रीज है, यूएस में जितने भी स्टेट्स है, और जापान कंट्री में, तीनों के लिए ये ICH एप्लीकेबल है कंपल्सरीली. ओके, बाकी कंट्रीज भी ये इसको अडॉप्ट करते हैं, बट these are not covering under the ICH. Okay, so don't worry about it. Let's move to the next one. That is dash works on the principle of dielectric constant and removes the unfilled capsules. Rotowave, Vericap, Rotostart, and Liquicil. Yes, any idea on this part? Very careful. Yeah, Vericap is the machine that is operating on the dielectric constant principle. ओके, आपका सॉर्टिंग के टाइम पे वो कितना चेंज होता है. रोटोवे का क्या यूज है पता है? दिस ऑल मशीन्स वी कवर्ड ड्यूरिंग द कैप्सूल डिस्कशन. ओके, सो अगर आपको वेइंग करना है तो योर रोटोवे इज रिस्पॉन्सिबल. वेरी कैप अगर आपका सॉर्टिंग के लिए है. ओके, देन रोटोस्टार्ट, actually it is not rotostart, it is rotosort. Okay, and liquicil is not with respect to your capsule formulation. Okay, soft gelatin के लिए है आपका ये. Yes, it is there are capsule itself, but hard gelatin के लिए नहीं है. The machine is different. So yes, if you see the option, Vericap is the right answer for this question. Let's move to the next one. That is, pick the false statement for the steps of coagulation microcapsulation methodology. Option A is the formation of 3 immiscible phases. Option B, dissolution of coating. Option C is the deposition of coating and rigidization of coating. Yes, what is the answer? Anyone knows? B option, resolution of protein. Yes. B option. ऑप्शन बी, यस, डिसोल्यूशन. आपको कोटिंग का कहीं पे माइक्रो एनकैप्सुलेशन में कोटिंग डिसॉल्व नहीं होता है, इट इज डिपॉजिटिंग. ओके, सो स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल फेजेस, देन डिपोजिशन होता है, देन रिजेक्शन होता है. ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर. डिसोल्यूशन आपका कहीं भी कोटिंग में होता नहीं है. ओके, माइक्रो एनकैप्सुलेशन में. देन अगेन दिस क्वेश्चन, व्हाट लोडिंग डू यू रिकमेंड? कंप्लीटली इनकम्प्लीट क्वेश्चन. स्किप आउट दिस, नो इश्यूज. इसमें इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है. Let's move to the next one. What are the advantages of liposol type of the ointment bases? They are chemically similar to the lipid film, which covers the skin. They do not become rancid. The film formed on the skin is permeable. It blocks the respiration on the skin, and they can be washed off from the skin. Yes, any answer? Liposol type of the ointments. Yes. Sir, Again, this. Yes. option A. Option A, that is, they chemically similar to the lipid film, which cover the skin. No. See, this question actually, if you see the liposol ointment basis, ये थोड़ा सा एडवांस का है. सेमी के बेस में हमें क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है दैट वी मे गेट द क्वेश्चन ऑन सेमी सोलर ऑइंटमेंट, जो कि बेसिस है आपके, जो कॉमन बेसिस है, लाइक एब्जॉर्प्शन इमल्सिफाइबल बेसिस या वाटर सोल्यूबल बेसिस, वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है. बट if the answer is provided, that is, it become the rancid, they do not become rancid. Okay, write down some of the examples of the bases and their examples. That is a little information which is useful. The first one is absorption basis, which is also called as the emulsifiable basis. The examples for this are anhydrous lanolin, then wool particle बोलते हैं इसको, then hydrophilic petrolatum, hydrophilic petrolatum. Okay, then emulsion basis,
lanolin, which is hydrous wool fat. Then water soluble bases also, third category. Macrocol is the example. Then all PEG based, जितने भी आपके सारे bases है PEG based, सारे water soluble है. Then polyoxyl 40 stearate. Sir, petrol atom will come in emulsion wala type, na? What one? Which one? Petrol atom will come in emulsion based, na? Because that is made up of hydrocarbon. No, it is Collagenous. emulsifiable. Hydrophilic petrol atom is the emulsifiable example. सर It वो might be थर्ड pure वाला petrol atom, एग्जांपल, might be, yes. सर थर्ड वाला एग्जांपल कौन सा वाटर सोल्यूबल बेस है? Water soluble polyoxyl 40 stearate. I'm writing it. And then polysorbates. सारे जो आपके हैं polysorbates are simply nothing but the twins. ये जो सारे बेसिस है आपके वो वाटर सोल्यूबल बेसिस के अंदर आते हैं. यस, गो थ्रू दिस सम ऑफ द एग्जांपल्स. आपको थोड़े से अगर आते हैं क्वेश्चन बेसिस पे तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर दिस इंफॉर्मेशन माइट बी हेल्पफुल फॉर यू attempting the question. Okay, so let's move to the next one. That is, which of the following are the advantages characteristic of polyethylene glycol gels? They can be easily spread on the skin. They are into the gas change through the skin and function of the sweat glands. They can be wasted from the skin and they are incompatible with several substances. Any idea? पॉलीथीन ग्लाइकॉल पीईजी आपका थोड़ा सा ऑर्गेनिक फिल्म जैसा होता है, फिल्म फॉर्मेशन का काम करते हैं ऑन द स्किन. सो आपका जो ऑप्शन बी है, Increase. एंटर द गैस चेंज थ्रू द स्किन एंड फंक्शन ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स, यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Let's move to the next one. That is, what are the advantages of so-called self-emulsifying on bases? Self-emulsifying bases are miscible with water without heating. They contain water, so they are cheap. That is not definitely the question option. इसको पहले से erase कर दो. The emulsion can be obtained from them without addition of the water, and water evaporates from them very slowly. Maybe ऐसा कोई option नहीं है water का. इसमें दोनों से अगर देखोगे सेल्फ इमल्सिफाइंग सिस्टम, जहाँ पे आपका एक्सटर्नल इमल्सिफायर या कोई भी एजेंट ऐड करने से पहले ही बाय डिफॉल्ट आपका इमल्शन बन जाता है. सो ऑप्शन सी, दैट इज इमल्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम विदाउट एडिशन ऑफ द वाटर, is the right answer. This is the advantage of so-called self-emulsifying ointment. Okay. Next one. Yes, usually maximum amount of the oil that can be added to the granulation without influencing the tableting characteristic is, option A is the 3%, option B is the 1%, C is the 0.75, 0.25. Factual question again. Yes, any idea about the answer? The correct answer is 0.75%. ऑयल अभी काफी जगह पे एज अ बाइंडर हम यूज कर सकते हैं, या like this is the major purposes. Okay, let's move to the next one. The USP, that should not be the B, it is USP device to test disintegration uses dash 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 glass tubes that are dash dash inch long and held against the screen of dash dash mesh. Disintegration USP के dimensions पता है? So ये जो options दिए वो आपको पहले पहले put करने, like what are how many tubes are there and उनका dimensions क्या है and what screen is there. So they use 6 glass Six. tube. Yes, option A is the right one. 6 glass tube. अभी 6 देखोगे तो बाय डिफॉल्ट नीचे के सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं. ग्लास ट्यूब 5 वो होते नहीं यूज, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है. सो ऑप्शन अगेन ए, 6 glass 3 inch long and held against the 10 mesh sieve, right? So option A is the right answer for this question. Let's move to the next one. The lab priority tester known as the Roche's priority. It revolves at dash dash RPM and dropping the tablet at dash dash distances. Roche's priority पता है ना? हाँ, ए ऑप्शन. Yes, कितने से होता है? What are the RPM? 25 RPM. 25 RPM. So B and C तो वैसे निकल जाते हैं
And then if you see the other options, the height of dropping the distance, dropping the tablets, 6 inches से आपके tablets drop होती है. If you imagine the diameter also, the circumference of the disc, वहां से आपको समझेगा 3 इंच इतना छोटा नहीं होता है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है. So option A is the right answer, 25 rpm, and it is dropping the tablet at the distance of the 6 inch. Next one, which of the following diluent is suitable for the moisture sensitive drug? अपने डाइट नोटबुक से क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द टैबलेट्स. एनीवन रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग द आंसर? मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए आपका कौन सा डाइल्यूएंट हम यूज करते हैं? Basic calcium phosphate. Yeah, it is not phosphatase, it is phosphate. Okay, so dibasic calcium phosphate is the right answer. Monobasic calcium phosphate हम यूज करते हैं. So yes, option C, lactose moisture sensitive के लिए हमने ये dry anhydrous lactose अगर होता तो we can think about the option. Okay, starch is also not used, and sorbitol is also not a user for the moisture sensitive. So dibasic calcium phosphate is the right answer for this question. Option C. Okay, I think this is the last question. So any doubt in the discussion? We can stop here. Sir, Yes. can you please explain that 50th question? Mesh size wala. Okay, let me open it. What is the number of question? मतलब question number क्या था? 50. 50. Total 100 squares in a 1 inch area are termed as. अभी यहाँ पे देखो, आपका 100 squares या कोई भी CU को mesh number जो हम assign करते हैं, that is based on the apertures, number of apertures that are provided in the 1 inch square area of that mesh. मगर आप मतलब आप mesh लोगे तो mesh में 1 इंच का square area आपको कंसिडर करना है, और उस एरिया में कितने होल्स है, जितने होल्स रहेंगे उतना उसका CU नंबर रहता है. So based on that, we selected the option that is not available in the provided options. मतलब 100 squares है 1 इंच में, तो उसका जो नंबर होना चाहिए CU number, that should be the 100 mesh CU. But that is not provided in the answer. 0.1 CU या 100 mesh, like if you consider the option C, like 40 mesh CU, तो उसमें क्या है, आपका 1 इंच का जो स्क्वायर रहेगा उसमें जो apertures रहेंगे, जो होल्स रहेंगे, वो 40 रहेंगे. Based on that, this question is depending. So the correct option should be the 100 mesh CU. That is not available. So 100 squares है, इसके लिए 100 mesh Yes, size 100 use squares है are there, क्या? 100 apertures are there for the in the CU. That's why we are assigning the number as 100 mesh. यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो 0.1 mesh CU या 10 mesh CU या 40 mesh या 25, इसका मतलब है उस CU में 1 इंच स्क्वायर में आपके 25 apertures है. Okay, sir. Yeah. Okay. Yes. सर जो कैप्सूल वाला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है? कौन सा वाला? कैप्सूल्स में. कैप्सूल्स में everything is important. Soft gelatin as well as hard gelatin का formulation, excipients, machine सारा important है. Don't skip anything from this. This is core question. आपका ये आएगा कहीं टैबलेट से नहीं आएगा तो कैप्सूल से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है. Don't skip anything. Analytical testing तो वैसे भी normal common है दोनों के लिए. What additional you need to study? Only machines. Formulation भी same है almost. सिर्फ additional आपको gelatin का जो evaluation है और manufacturing है वो आपको थोड़ा सा consider करना है. Nothing else. Don't skip this topic. It is very important. सारे के सारे उसमें से points important है कैप्सूल्स के लिए. कैप्सूल मतलब फॉर्मुलेशन जो कोर सब्जेक्ट टॉपिक्स है, कैप्सूल्स एंड देन योर टैबलेट्स एंड देन योर इमल्शंस, सब्स्टेंस, देन पैरेंटल्स, इसमें से कहीं पे भी कौन सा भी आप एरिया स्किप मत करो. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. Sir, I have Yes. sent you one photo. It shows ये क्या बोलते हैं ना classification Okay, for let me check. semi-solid का ointment basis. Where are you referring from? It looks like slide share. Yes sir. हम लोग को यही slide दिया था. Please do not refer such sources of information. Okay Go sir. to just
Okay, just go through the standard books. If it is available, then we can correct our explanation. No issues. Okay, sir. But what is expected, like we should stick to the standard reference book because NTA will consider the answers that are provided in the standard books. And we may Yes. expect, I'm not saying that this is not wrong, this is wrong, but there may be chances like we cannot so sure on this part. Like आप ऐसे firm नहीं Sir, रह I'll सकते. check the reference book once and let you know. Yeah, just check it. No issues. सर Yes. सर अभी कुछ दिन पहले हमारा ओसी का एक लेक्चर अरेंज किया था सूरज सर ने. सो लाइक कैन यू अरेंज लेक्चर लाइक फॉर बायोकेमिस्ट्री पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो What उसमें क्या information? क्या Like what is the chapter area that requires the revision? लाइक बायोकेमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा लाइक पढ़ना चाहिए एंड ऑल दोस पार्ट, क्योंकि वो बहुत Metabolism पहले. is metabolism is very important for the lipids, carbohydrates and proteins. ओके. Metabolism कहीं भी skip मत करो ही मत. Like सारे glycolysis, then all of the HMP shunt and all Kelvin cycle, everything is important from the carbohydrate metabolism. Then I always recommend one chapter to go through. अगर आपका तीनों का आपका then there is one chapter, integration of metabolism is provided, though it's not in the syllabus, but it will help you to understand this metabolism is in like right way. आप ये थोड़ा सा 3-4 पेजेस का चैप्टर है. इफ यू जस्ट चेक द सत्यनारायण में तीनों मेटाबॉलिज्म हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म. उसका नेक्स्ट टॉपिक ही आपका ये है. लाइक लेट मी चेक, आई हैव बुक. मैं आपको इमीडिएटली उसका पेज नंबर भी बता देता हूँ कहाँ पे है. तो वहां से वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म टॉपिक है, वो थोड़ा सा गो थ्रू करो. वो आपको काफी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मेटाबॉलिक पाथवेज एंड हाउ एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड विद ईच अदर. यस, सेक्शन में देखो 16 नंबर टॉपिक है ऑन 380 पेज ऑफ द सत्यनारायण 380. वहां पे ये टॉपिक दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. जस्ट गो थ्रू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डू यू रिक्वायर एनी रिवीजन ऑन द एनी पार्ट, लाइक बायोकेमिस्ट्री में कहीं पे आपको डिफिकल्ट जा रहा है और एनी अदर सब्जेक्ट? थोड़ा विटामिन वाला टॉपिक पे ऊपर थोड़ा रिवीजन चाहिए, विटामिन एंड लिपिड्स. Okay, everyone is facing the issue with vitamins. और सी विटामिन में अगेन आपको थोड़ा सा जो बेसिक पता होना चाहिए, लाइक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी कैन कवर इन द विटामिन इज क्लासिफिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन डिफिशिएंसी. इससे ज्यादा डिटेल में आपका कहीं पे आएगा नहीं. क्लासिफिकेशन आपको पता है तो उसमें मेजर स्केलेटन क्या है वो आपको थोड़ा सा पता है, कॉमन नेम्स उसके. दैट इज व्हाट इनफ फ्रॉम द विटामिन्स. If Sir, you require them, just Chaitanya message me. I'll arrange the notes for you for the ओके. vitamins. फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए और हाँ. do we do ADME and the numericals या what all exactly? Like मैंने ADME और numericals ही किया अभी तक, और कुछ Okay. क्वेश्चंस मतलब ऐसा डिफिकल्ट लगा नहीं अभी तक, बट is there something else should I do? Along with it, go through this your protein binding. जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है. हाँ उसमें काफी जो प्रोटीन्स है उसके मॉलिक्यूलर वेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दिस प्रोटीन्स, लाइक अल्फा अमीनो एसिड्स, आपका लिपोप्रोटीन्स क्या है और उसका एक फंक्शन क्या है, वो थोड़ा सा सी ऑन द एडीएमई. द क्वेश्चन यू विल रिसीव इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट लॉजिक. आपको थोड़ी थोड़ी सी उसमें बेस भी पता है ना, तो आप लॉजिक पे बेस पे ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन, देन एक्सक्रीशन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. मेटाबॉलिज्म इज ऑलरेडी आई थिंक आपका मेडिकेमी भी कवर हो जाएगा, तो वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में बायोफार्मास्यूटिक्स में एडिशनल कवर करने की जरूरत नहीं है. वट एवर यू कवरिंग इन द लाइक फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक. थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो. इफ यू आर ऑलरेडी रेडी विद द न्यूमेरिकल्स, दैट इज रियली गुड थिंग. हमने ये न्यूमेरिकल्स आई थिंक थाने ब्रांच में कवर भी करे थे कुछ थोड़े से ऑन दिस पार्ट. सो फैक्टर्स अपनी थोड़े से गो थ्रू करो. सो अगर आपको पता भी है कि कौन सा फैक्टर, और सारे लॉजिकल है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. देन एब्जॉर्प्शन क्या है, तो देन पाथवेज और मैकेनिज्म्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिकली. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. छोटा टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट है.
एक्सप्रेशन आपका कवर हो जाएगा। हाँ एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी डिराइव प्रोडक्ट्स है उसमें क्या करना है एग्जैक्टली? पायरोजन डिटेक्शन, डीएनए से कंटामिनेंट वगैरह? I don't have like a syllabus copy. Will you just share me on the WhatsApp? I'll check it immediately. यस सर, शुड आई सेंड यू द स्क्रीनशॉट वो वाले पार्ट चलेगा का? चलेगा चलेगा, नो इश्यूज। सर यस बोलो चैतन्य। आई सर सेंट वो इट। हम्म सर वो पोसोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसमें वो प्रिस्क्रिप्शन वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो लाइक इम्पोर्टेंट है क्या, लाइक फॉर जीपैट? yes, one question you may expect on this part, postology. GPAT में ओके नहीं आएगा तो नाइपर में definitely there will be the question on postology. Postology काफी simple problems है, like उसमें ज्यादा कुछ difficult नहीं आएगा, but you should know. See चैतन्य, कभी कभी क्या होता है, postology के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आपके फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके 10-12 तो फॉर्मूला है, आपको उतना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके एंड इफ यू नो द फॉर्मूला, उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। या ओके यस ओके, बायोटेक ड्राई प्रोडक्ट में डाउनस्ट्रीम किया है अभिजिता? यस सर, डाउनस्ट्रीम हो गया है। डाउनस्ट्रीम है, देन इम्यूनोलॉजिकल अप्रोचेस टू डिटेक्शन ऑफ कंटामिनेशन, दैट इज नॉट लाइक प्रोटेक्शन प्रिवेंशन रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स, एटलीस्ट कवर द डाउनस्ट्रीम। और सोर्सेस ऑफ अपस्ट्रीम भी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कवर करो, वो सब दिया है सत्यनारायण में। वो वाला पार्ट हो गया है सर, उसके नीचे वाला जो है ना, इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच अप्रोचेस, एंड ट्रांसजेनिक वाला पार्ट, वो एक्चुअली नहीं इसका किया इश्यू मैंने। क्या है, यू विल नॉट गेट दिस पार्ट एनीवेयर। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे इसको इसके मतलब कोई टॉपिक के अंडर कवर नहीं किया है। मतलब I think this is not the time to go with along this go with this topic। अभी आप थोड़ा सा स्किप किया तो चलेगा, नो इश्यूज। बट इसका इश्यू है कि एक जगह के सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे नहीं मिलेगा कहीं पे। सर एंड ट्रांसजेनिक में एग्जैक्टली कौन से करने हैं? जो 12th में किए थे वही करना है या कुछ और? ट्रांसजेनिक कहाँ पे है? ए पार्ट में, सोर्सेज एंड अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। प्रोसेस ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम इंस्टीरियर बोल रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसा जो उन्होंने किया कुछ दिया नहीं है, जस्ट आइडिया लेके रखो, ओवरऑल स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। आपके 12th में दिए तो वो रैट एंड माउस के वगैरह दिए, तो एनिमल्स में उतने करोगे। फर्स्ट शिप वो कौन सा है वो वाला, वो आप कर सकते हो। वो डॉली स्पेसिफिक प्रोटीन ऐसा है तो उसका। उन्होंने कुछ फोकस नहीं किया है इसमें, ओके सर, तो चलो। एटलीस्ट ओवरऑल आइडिया लेके रखो, लाइक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यस चैतन्य, क्या बोल रहे थे? नहीं सर, वो नाम याद है कि वो फर्स्ट फ्रेंच को डॉली समथिंग शिप था ना? हाँ डॉली शिप था वो फर्स्ट, वो कुछ हाँ हाँ डेथ भी हो गया वो, ऐसे मतलब जनरल जनरल इंफॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट करके रखो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो वी कैन नॉट गेस लाइक व्हाट टू प्रिपेयर एंड व्हाट नॉट टू। ओके, एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स जनरल में, और कुछ इशू फेस कर रहे हो? सर आप एक एनालिसिस का लेक्चर ले सकते हो क्या? ऑन व्हाट टॉपिक? टाइट्रेशन बेसिक्स वाला, मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैंने बहुत कोशिश किया था, ओके, कंफ्यूज हो रहा है बीच बीच में। ले सकते हैं। एंड प्रिंसिपल्स ज्यादा फोकस कर टाइट्रेशन पे। सी टाइट्रेशन पे अभी तो थोड़ा सा प्रिंसिपल पे फोकस करो, एंड इलेक्ट्रोड्स जो स्पेसिफिकली दिए उसका क्लासिफिकेशन भी करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। टाइट्रेशन में और कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आएंगे तो फैक्चुअल आएंगे। तो फैक्चुअल का तुम वैसे भी अगर पता है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गेस द आंसर। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड इलेक्ट्रोड्स जो थोड़े से है वो आपको करने हैं, एंड प्रिंसिपल इफ यू वांट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब, दैट इज जनरल। टाइट्रेशन काफी जनरल टॉपिक है, दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द फार्मेसी। Analytical काफी common topic है। If you are facing issue, then let me know. We'll arrange one lecture. No issues with that. I have the material. हम डिस्कस कर सकते हैं उस पार्ट पे। एंड सर आईआर वैल्यूज और एनएमआर वैल्यूज वगैरह के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं क्या, स्ट्रक्चर यस डिफाइन? आते हैं आईआर वैल्यूज पे आते हैं, एनएमआर पे आते हैं, along with नहीं it। नहीं, नॉट टेलिंग द वैल्यूज, ओके, लाइक आईआर इंटरप्रिटेशन। वैल्यूज के बेसिस पे, हाँ, इल्यूसिडेशन वाला। इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा लाइक इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
बट थोड़ा सा एक दो सिंपल सिंपल स्पेक्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो. इट विल हेल्प यू टू गिव कॉन्फिडेंस ऑन दिस पार्ट. लाइक अगर देखोगे तो लाइक सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच है, तो काफी सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनका सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच एक ही एरिया में आता है. बट अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन करोगे तुम लाइक कि एसिड है तो एसिड क्या और कौन से स्ट्रेचेस आते हैं और उसकी वैल्यूज क्या है, ऐसे थोड़े से उस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करोगे ना, तो इट विल गिव यू लिटिल कॉन्फिडेंस ऑन दिस पार्ट. वैल्यू सिंपल रटोगे तो भी चलेगा, इशू नहीं है. बट थोड़े से आपको बैकअप पता होनी चाहिए. लाइक इफ लाइक एसिड है तो एसिड का स्पेक्ट्रा कैसे आता है, लाइक व्हाट आर द पिक्स एंड व्हाट इज द परसेंट ट्रांसमिटेंस वैल्यू, उसका मतलब कितने रेंज में या कितने इंटेंस का इंटेंसिटी का पीक आता है, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. सो फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक आप आईआर ग्राफ्स भी देख के एक बार रखोगे ना तो भी मोर देन इनफ है. इंटरप्रिटेशन या ऐसे में क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आएंगे भी तो काफी बेसिक लेवल पे आएंगे. जैसे कि अमाइंस है, अमाइड्स है, जो जो स्पेक्ट्रा आपको क्लैरिटी देते हैं अच्छे से, वही से आएंगे. कंफ्यूजिंग नहीं आएगा कि अल्डिहाइड का है कि कीटोन का है, ये बताओ ऐसा. ओके सर. या एनीथिंग एल्स? कौन कौन है मीटिंग में? लेट मी चेक. कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? और यस, रोहित, सुजीत, त्रिशा, व्हाट इज योर स्टेटस? कैसे कर रहे हो प्रिपरेशन? सर करंटली तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ओके. जो नहीं समझ रहा है उसको बैक रिवीजन कर रहे हैं. ओके. एंड गेटिंग गुड स्कोर? नॉट ग्रेट सर, लाइक जितना एक्सपेक्टेशंस है उतने नहीं आ रहे हैं. Okay, so what is the expectation then? You're setting for the every question is the same, every question paper. See, don't worry about the score. Okay, आपका like in my case also my high score was the final score only. जीपैट का ही सबसे मेरा बहुत ज्यादा स्कोर आया था, उसके पहले मेरा भी कहीं पे नहीं आ रहा था. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन. ओके, यस स्कोर का, सर. हाँ स्कोर का इशू नहीं है, उसका टेंशन मत लो. वो आएगा एट द एंड, आएगा मुझे पता है. जस्ट वट एवर यू आर डूइंग नाउ यू डू इट विद द कंप्लीट ऑनेस्टी. यस अच्छे से सर, प्रिपरेशन थैंक करो, यू सर. कंसिस्टेंसी दो. डोंट वरी अबाउट द स्कोर्स. स्कोर्स को देखो ही मत आप. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. या रोहित, सुजीत, व्हाट इज योर स्टेटस? कैसे कर, गोइंग गुड? हेलो सर. बोलो. हेलो. बोलो बोलो, आई एम ऑडिबल. सर एक्चुअली मेरा एप्लीकेशन बेसिस में प्रॉब्लम हो रहा है. मेरे थियोरी क्लियर है बट जब ये एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ ना तो थोड़ा सा जंबल हो जाता हूँ. कौन से एरिया में बट सेम स्पेसिफिकली? अगर, सॉरी सर. कौन सा एरिया स्पेसिफिकली, लाइक व्हाट व्हिच सब्जेक्ट, व्हिच टॉपिक यू आर फेसिंग द इश्यूज सर ऑन द एप्लीकेशन बेसिस? मेडिकेम मेडिकेम और थोड़ा सा कोलो में सर. ओके, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई कैन यस सजेस्ट. सर, वही थोड़ा बेसिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ फिलहाल. थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे. लाइक थोड़ा सा लॉजिक, मतलब थिंकिंग, आपका इंफॉर्मेशन एडिशनली पता है तो आपका थिंकिंग उस डायरेक्शन में हो जाता है. एडिशनली मतलब लाइक व्हाट वी सजेस्ट इज वी लाइक गो फॉर द अटेम्प्टिंग बाय एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस. लाइक कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इस अप्रोच से जाओगे ना तो उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफी पता होनी चाहिए. तो वो थोड़ा सा पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, तो देन आई थिंक इट विल बी इजी फॉर attempting the questions. ओके सर. थोड़ा सा गो थ्रू करो. इफ यू वांट यू रेफर द एडिशनल बुक्स. मेडिकम कोलॉजी के लिए चाहिए तो विल्सन से आगे जा सकते हो थोड़ा सा. देन यू कैन गो फॉर द रैंक एंड डेल 2. काफी अच्छा बुक है, स्पेसिफिकली रिकमेंड दिस बुक. रैंक एंड डेल काफी अच्छा बुक है. अगर तुम्हारा केडी अच्छे से कॉन्फिडेंस से हुआ है पढ़ के, तो देन जस्ट गो थ्रू द रैंक एंड डेल. लाइक एक टॉपिक कवर करने के लिए तुम्हें आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, इफ यू आर रियली गुड विद द केडी त्रिपाठी. काफी अच्छा श्योर बुक है. सर. थोड़ा सा एडिशनल डिफरेंट डिफरेंट बुक रेफर करोगे तो इट विल हेल्प यू. ट्रायंगल के टेबल्स और ये काफी इंफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग दी है, और रिप्रेजेंटेशन उसका इंफॉर्मेशन काफी अच्छा है. सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट बुक. श्योर सर, थैंक यू सर. ओके, चलो देन. एनी इश्यूज यू आर फेसिंग देन यू कैन, मेरा नंबर है, आप ले सकते हो कहीं से भी, मेरी कभी भी कांटेक्ट करो, इश्यूज नहीं है. ओके, जस्ट प्रिपेयर द
इन गुड वे। ओके, आपको बेस्ट दो आपका। अभी ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आई थिंक हार्डली डेट्स आउट हुए हैं कि जीपैट के? अभी नहीं हुए शायद। नहीं सर, अभी तक कुछ अपडेट नहीं आता। ओके, सो यू हैव टाइम। ओके, अभी 1 महीना तो आपके पास रहेगा, 1 डेढ़ महीना रहेगा। सो पूरा रिवीजन का टाइम है अभी। सॉल्विंग करो। डोंट 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 वरी अबाउट द स्कोर्स, दीज आर नॉट योर फाइनल स्कोर्स। ये जितना आप अच्छे से अभी करोगे तो स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड में। Yes. ओके, चलो देन विल स्टॉप हियर। थैंक यू सर। ओके, वंस अगेन Thank हैप्पी you, होली sir. everyone. Then we can you can leave the meeting. Okay.